and you see him high and lifted up, the train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you When I was very young, just finished my education, became a pastor of a church in America. जब मैं बहुत जवान था, अपनी पढ़ाई खत्म करके अमेरिका में जब मैं एक कलीसिया का पास्टर बना, Just as if it happened accidentally, it happened. एक दुर्घटनावश वह हुआ, But it was God. पर परमेश्वर उसके पीछे था. Became a pastor of an American church. एक अमेरिकी कलीसिया का पास्टर बन गया. Just 25 people were there. सिर्फ 25 लोग वहाँ पर. Within 1 year, we became 200 people. एक साल में जो 200 लोग हो And गए. growing very fast. और बहुत जल्दी बढ़ने लगे. And they paid me a salary. उन्होंने मुझे एक अच्छी तनख्वाह दी. I never asked them how much you pay me. मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि कितना आप मुझे दोगे. I never asked them anything. They never asked me anything. मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, उन्होंने भी कभी मुझसे नहीं पूछा. They never, had a proper interview, questioned me or anything. I went to preach there as a guest preacher, and they asked me if I will be their preacher, their उन्होंने कभी pastor. मुझसे कोई इंटरव्यू कुछ नहीं किया. उन्होंने पूछा, मैं वहाँ पे गेस्ट प्रचारक में गया. उन्होंने कहा, And I declined. मैंने कहा ठीक है करूँगा. But then they persisted on having me फिर as their उसके बाद pastor. उन्होंने दबाकर मुझे बोला कि तुम्हें जो पास्टर So बनाया, I became their pastor. तो मैं उनका पास्टर बन गया. Because God also spoke to me and said, you stay here. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ I पर took रहो. that small church and began to preach. तो मैं वो छोटी सी कलीसिया को लेकर प्रचार करने I लगा. didn't know what the financial arrangement was. मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर क्या आर्थिक अरेंजमेंट्स किया जा रहा है मेरे And लिए. this was my first experience. वह मेरा पहला अनुभव था. I didn't ask them, how will you pay my house? Will you pay my car? And this and that. मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या तुम मेरे घर का भाड़ा दोगे, कार But they दोगे. did give me a car and they did give me a house. पर उन्होंने मुझे एक अच्छा कार भी दिया, एक अच्छा And घर gave भी me a दिया, pretty good salary. एक अच्छी तनख्वाह भी उन्होंने दी मुझे. And then at the end of the period, maybe 7-8 months when everything was growing very fast. 7-8 महीने के बाद जब सब कुछ अच्छा बढ़ने लगा, there were 5 people that were running the church. तो 5 लोग थे जो उस कलीसिया को चला रहे थे. They were in charge. वे उस कलीसिया के So इंचार्ज थे. they talked to me and they said, we've been talking about how we can increase your salary. तो वे बात करने लगे कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए. Because they realized I was doing a better job. क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. They realized that I was doing a good तो one. उन्होंने महसूस किया कि मैं सचमुच अच्छा So काम they कर रहा said, हूँ. we're talking about how we can increase your तो salary. हम कहने लगे कि हम बात कर रहे हैं कैसे आपकी तनख्वाह So बढ़ाई we जाए. decided we'll give you this much. तो हमने निर्णय कर लिया कि हम आपको इतना दें. But we also decided on another thing. पर हमने यह भी निर्णय किया है
they said, listen to this. They said, we believe that we should not limit your salary. कहने लगे कि To हम our भरोसा increase. करते हैं कि हमारे वृद्धि के अनुसार हम आपकी तनख्वाह को लिमिट में ना रखें। So we're going to mention in the offering envelope itself that if anybody wants to give to the pastor, they can give it and it will be handed over to him. तो वो कहने लगे कि एनवेलप में जो है हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप पास्टर को देना चाहते हैं तो वो भी रकम वहां लिख दें। In their offering envelope, it said tithes, offerings, missions, and building fund, this, that, and all that, you know. Along with that, Pastor तो Sam. उनके ऑफरिंग में जो है दशमांश के बारे में, दान के बारे में, बिल्डिंग फंड के बारे में, मिशंस के बारे में और पास्टर सैम के I लिए भी never लिख दिया। asked them. मैंने कभी नहीं पूछा उनसे। They referred to this verse. वे इस वचन को They said, बताने लगे। we think that's the right thing to do for तो you. उन्होंने कहा कि आपके लिए यही सही काम होगा। Why should we say this much and no क्यों more? हम कहें कि सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा नहीं? Yeah, we'll give you basically this much. हाँ, हम आधारभूत इतना आपको तनख्वाह We'll दे give you a देंगे, house, we'll give you a car, we'll give you a salary. घर देंगे, कार देंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे, Pay all your expenses. सारे तुम्हारे खर्चों को हम देख लेंगे। But, we don't know how much God wants to give you. पर हमें नहीं मालूम परमेश्वर आपको कितना देना चाहता है। Let him give you as much as he wants. जितना वो चाहे उतना देने दो, We are not going to stop it. हम उसे नहीं रोकने वाले हैं। So, they took the limits off. तो वे उन सीमाओं को हटा चुके। Before they took the limit off, I never had any limits. उनकी सीमाओं को हटाने से पहले मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं थी। Lot of times we ourselves have limits. बहुत सारे समय हमारे खुद की सीमाएं रख लेते हैं हम। I worked with all my heart. अपने पूरे मन से मैंने काम किया। And I tell you, they took the limits off. And when they took the limits off, that's it. मैं कहता हूँ वे उन सीमाओं को हटाने वाले थे, जैसे उन सीमाओं को हटाए तो It बस started flooding in. अपने आप बहने लगा The मेरे अंदर। blessing of the Lord. परमेश्वर की आशीष No बहने limit. लगी, कोई सीमाएं नहीं। Unlimited salary, pastor. अनलिमिटेड तनख्वाह आने लगी। ऐसा That's the way पास्टर I बना। worked. ऐसा ही मैं काम करने लगा। Unlimited salary. अनलिमिटेड तनख्वाह, That's the way they arranged it for me. ऐसा ही उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया। I remember one local pastor who had a bigger church than me met me one time. मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ के लोकल पास्टर जो मेरे से भी बड़ी कलीसिया उनकी थी। We were talking about, he was talking about salaries and all, he was griping about his church. वे जो है तनख्वाह के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कलीसिया के बारे में बुराई कर रहे थे। So he asked me how much they're paying you. तो उन्होंने मुझसे पूछा कितना आपको तनख्वाह दे रहे I हैं। told him, he was shocked. He said, my God, they're paying you so much. मैंने बताया इतना देते हैं तो वो आश्चर्यचकित हुए, इतना देते I हैं said, क्या? I don't know what's the right salary, brother, here. I'm new to this thing, I don't know about anything. They're giving me that, I'm taking it. मैंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, बिल्कुल नया आदमी हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं मालूम, वो दे रहे हैं, मैं उतना ले रहा हूँ बस। I never asked anything. मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। Then I told him this thing. फिर मैंने उनसे कहा ये बात। Then I got unlimited income also. फिर उसके बाद अनलिमिटेड इनकम भी मेरे लिए है। Anybody that wants to give to me can give to जो me. मुझे देना चाहता है अपनी मन मर्जी He से दे said, सकता my है। God, how did they do it? उन्होंने कहा कैसे वे ऐसा कर सकते हैं? He said, what do you preach? मैंने कहा क्या प्रचार करते हो आप? I said, come and hear. मैंने कहा आकर सुनिए। And he used to come every Thursday. We used to have like Tuesday nights here. I used to have a Thursday night packed out place. तो हर दिन जो है वहाँ पर हर हफ्ते में जो बृहस्पतिवार को वहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पे मंगलवार And को I है। said, come and hear what I preach. तो मैंने कहा आकर सुनो मैं जो प्रचार करता After he हूँ। heard, he said, no wonder. मेरे बात को प्रचार करने सुनने के बाद कहने लगे कि आश्चर्य की बात ही Because नहीं, I am preaching to bring blessings upon people. क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी में आशीषों को लाने के लिए प्रचार कर रहा It's हूँ। the kind of preacher that this Bible is talking about. उस तरह के एक प्रचारक को ही जो है बाइबल यहाँ बता रहा Muscle है। the ox that treads out the कहा गया है corn. कि दामने वाले बैल का मुंह न बांधना। Why? क्यों? Because without that ox, you're not going to have anything to eat. क्योंकि उस बैल के बिना तुम्हारे खाने That's के लिए the कुछ नहीं thing होगा। that treads out the horn. वही जो है And that's दावता the है, thing that really brings out the food for और you. वही जो है बैल तुम्हारे लिए You're खाना भी eating देता है। because of that ox. उस बैल के कारण ही तुम खाते हो, So let it eat. तो उसे खाने दो। Let it eat as much as it wants, as it treads out the corn up and down as it goes. Let him eat to the जितना stomach वो full. दावता है, जितना वो जो है उस फसल को दबाता है अपने पांव तले, जितना वो काम करता है उसे खाने Hello? दो। हेलो, Are you there? क्या आप हो कि नहीं? Let him eat as much as he wants. जितना वो बैल चाहता है उसे खाने दो, Don't tie his mouth, उसका मुंह मत बांधो, because he's worthy of double honor anyway. क्योंकि किसी भी तरह दुगने आदर का योग्य है वह। I told this man here, was concerned about salaries. जो इस तनख्वाह के बारे में चिंतित था, उस व्यक्ति से मैंने कहा, I told him, very good, whatever you're thinking in your mind, I'm worth at least double. मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में जो कुछ तुम सोच रहे हो है वो दुगना हो जाए तो अच्छा है।
whatever you fix, I'm worth double. जो कुछ तुम फिक्स करते हो उसके दुगने का योग्य हूँ मैं। But I feel that I can have as much. पर मुझे महसूस होता है कि मैं जितना चाहता हूँ उतना मैं पा सकता हूँ। It's only according to my faith it's going सिर्फ to be. मेरे विश्वास के अनुसार ही वो होने वाला I है। cannot have anything without faith. विश्वास के बिना मैं कुछ नहीं पा सकता। Everything is going to be according to my faith. हर only. एक चीज जो है मेरे विश्वास के अनुसार ही होने How वाला है। much money I'm going to earn is going to be according to my faith. इतना पैसा मैं कमाने वाला हूँ मेरे विश्वास के अनुसार है। Amen. Amen. I really believe that. मैं सचमुच से विश्वास करता It's हूँ। not going to be according to something somewhere. किसी और चीज के अनुसार या किसी और के विश्वास के अनुसार Not नहीं। according to this organization. इस संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के Or अनुसार these नहीं, people that are talking about this. या फिर जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं According उनके अनुसार to नहीं, my faith. मेरे विश्वास के अनुसार। Even if where I'm working for, if they don't give it, God will give it from somewhere. जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उस संस्था से नहीं हो तो कहीं और से भी परमेश्वर will मुझे come देगा। somewhere. कहीं और से मेरे लिए So आएगा। I don't worry तो about मैं it. उसे लेकर चिंतित नहीं हूँ। I don't go fight about salary. I don't go ask about salary. I don't gripe about salary. I don't even talk about salary. I don't even ask the people to give me something. मैं अपने तनख्वाह को लेकर चिंतित नहीं हूँ, उसे लेकर मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। No. Let God give me whatever He wants. परमेश्वर जो चाहता है उसे देने दो। I'll tell you, He's always given me much more than what I wanted. मैं तुमसे कहता हूँ जितना मैं चाहता था उससे कहीं अधिक परमेश्वर मुझे One दिया man है। said, "Don't say like that, brother. Then people won't give." एक आदमी ने कहा कि ऐसा मत कहो ब्रदर, लोग नहीं God देंगे। gives me much more than I want. जो मुझे चाहिए उससे कहीं गुना अधिक मुझे देता है परमेश्वर। Always. हर Because वक्त, He's God. क्योंकि वो परमेश्वर And है। I'm bold enough to say it. और मैं साहसपूर्वक इसे कह सकता हूँ। So, you need to honor those who are over you spiritually. जो आपके ऊपर हैं आत्मिक रूप से उन्हें आदर करो। You know, in some circles I've seen people want to earn more and more and more. When it comes to the preacher, they want to give him less and less देखिए, and कुछ less. जगहों में मैंने देखा है लोग बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत ही कमाना चाहते हैं, और प्रचारकों को देने की बात आए तो कहते हैं कि नहीं है, बहुत कम है। When they get together and talk about their pastor's salary, they say, "My God, why do you want to pay him so much?" You know. पास्टर की तनख्वाह के बारे में बात करें तो कहते हैं क्यों उन्हें इतना दिया जाए। I've noticed that. मैंने उसे देखा But है, I'll tell you, there won't be blessing in such places. पर मैं कहता हूँ ऐसे जगहों में कोई आशीष नहीं होगी। The minister of the word of God is worthy of double honor. परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वालों को दुगना आदर He देना must be चाहिए, highly appreciated also. उन्हें ज्यादा प्रशंसा भी की जानी चाहिए। That's very important. बहुत जरूरी है, He must be honored उन्हें आदर दिया जाना and चाहिए appreciated. और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, Because it is from him you derive a lot of things. क्योंकि उन्हीं के पास से तुम बहुत चीजों को पाते हो। You know, Jesus Christ has done everything on the cross. यीशु मसीह ने सब कुछ सूली में कर दिया है, But you need somebody to tell you that. और उसे कहने लायक Who तुम्हारे will पास होना tell you all चाहिए। that? कौन तुम्हें That's बताएगा? the preacher. वही प्रचारक So है। he becomes a very important तो person. वह तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी व्यक्ति बन जाता Bible है। says, if you did not hear it, how will you believe? If you did not believe, how you'll call upon his name? And if you don't call upon his name, how you will be saved? बाइबल कहता है कि तुम नहीं सुनोगे तो कैसे विश्वास करोगे, विश्वास नहीं करोगे तो कैसे तुम भेजोगे, भेजोगे नहीं तो कैसे कोई सुनेगा। In 2 Kings chapter 4, दूसरे राजा की पुस्तक चौथे अध्याय में there is a wonderful story. एक अद्भुत सी कहानी है। There is a woman called the Shunammite woman. शुनेम की एक स्त्री थी। The story begins with verse 8. 8वें वचन से जो कहानी शुरू होती है। You know, it says, there was a man of God that used to come through their house, travel in that direction, and she asked him to stay at her house and eat and all देखिए, that. एक दिन ऐसा हुआ कि उस रास्ते से जो एक भविष्यवक्ता जाता है और वो स्त्री जो है बुलाकर उसे घर में रहने के लिए व्यवस्था She करती है। found that he was a good man of वो God. जानती है कि एक भला परमेश्वर का व्यक्ति है। So she thought in her heart, maybe she should build a chamber for him at the top of her house. तो उस स्त्री ने सोचा कि इस भविष्यवक्ता के लिए जो है घर के ऊपर एक कमरा बनाया जाए। She told her husband, they're quite wealthy couple, and she told her husband, let's build a room, a prophet's chamber in तो our वो house. अपने वो स्त्री जो है धनवान होने के कारण जो है अपने पति से कहती है कि इस भविष्यवक्ता के लिए And we'll ऊपर put a एक कमरा table बनाया जाए। there, we'll put a lamp there, we'll put a chair there and a bed वहाँ there. पर जो है एक दिया रखेंगे, वहाँ पर एक खाट रखेंगे, एक मेज रखेंगे, This is दीवार thousands रखेंगे। of years ago. She's talking about a well-furnished 5-star room, you देखिए, know. ये हजारों साल पहले की बात है। 5 स्टार होटल का एक कमरा वहाँ बनाना चाहती And है। I'm talking about days when these fellows slept under the tree sometimes. देखिए, you ये know. इन दोनों की बात है जब भविष्यवक्ता लोग जो है पेड़ के नीचे सोया And करते this थे। lady is talking about a bed and a chair and a table and a lamp for the man of और ये God. स्त्री कहती है कि ऊपरी कोठरी में जो है उन्हें एक अच्छा खाट, मेज, कुर्सी, If you दीवार look at रखे। verse 10, you know, it says that's what she talked about. 10वां वचन पढ़े तो उसी के बारे में कहा गया है। And the husband agreed and they built it. और पति हाँ कहता है और उन्होंने बनाया फिर।
And the man of God used to habitually come that way and stay there and eat and rest and then go on his और journey परमेश्वर का ministering. व्यक्ति जो है जब जब उस रास्ते से जाता था तो वहां जाकर जो है जाकर आराम Now, करके one जाता day था। as he came there and turned in there to sleep, एक दिन जब वह वहां से आकर वहां सो he रहा called था, his servant Gehazi and told him, call this Shunammite woman, he said. उसने अपने सेवक गेहसी से कहा उस सुनेमिन को बुला ले। Verse 13 he says, and he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is it to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people. तब उसने गेहसी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। Now the prophet was not only a great man of God who did miracles and all, he was a very influential person. He can talk to the king or to the army chief and get things done for her. देखिए, ये सिर्फ परमेश्वर का दास ही नहीं बल्कि बहुत ही जाना माना व्यक्ति भी था जो राजा से सीधे तौर से बात कर सकता था या सेनापति से सीधे तौर से उसकी So चर्चा as he कर was सकता था। laying in his bed, he thought, my God, this woman, out of the blue has done so much good for me. She's built a room, provided all this furniture, takes care of me so well. Let me try to do something, find out what she needs. And he said, can I talk to the king? Can I talk to the army chief for you? Get you something, some favor, something that you want ये done. व्यक्ति जो है जब अपने बिस्तर में लेटा हुआ था तो अपने सेवक को बुलाकर बोलता है कि स्त्री को बुलाकर पूछा जाए कि क्या किया जाए, इसने बहुत हमारी चिंता की है, तो इसको जो राजा से बात किया जाए या सेनापति से बात किया जाए, इसकी मांग Any क्या है? recommendation she needs? क्या किसी रिकमेंडेशन की जरूरत है And इसे? the lady says, no, I'm living very well among और my स्त्री own कहने people. I लगी don't कि need nothing. मैं अपने लोगों में बहुत ही खुश रह रही हूँ। She must be quite well settled. शायद अच्छी तरह सेटल हुई स्त्री She थी वो। doesn't need any help from him. उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं थी किसी से। And he said, what then is to be done for her? He asked the servant. फिर उसने अपने सेवक से पूछा कि इस स्त्री का क्या किया जाए, इसे क्या When the चाहिए? lady said, no, I'm fine, I'm doing fine. He said, what can we do for her? He said to the servant. तो उसने सेवक से कहा कि क्या इसके लिए किया जाए? Gehazi, the servant, answered, verily she has no child and her husband is old. गेहसी ने उससे उत्तर दिया कि इसकी कोई संतान नहीं है, इसका पति बहुत बड़ा हो चुका And he है। said, call her. And when he had called her, she stood in the door. और जब उसे बुलाया गया तो वो द्वार पर खड़ी रही। And he said, about this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती में लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न She दे। said, no, we tried all these years, we didn't have any child. Now don't speak something that's not going to come to pass, Don't create new expectation and then leave me dry, स्त्री कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा धोखा मत दो, हमने बहुत कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत कोशिश करने के बाद अब ऐसा कुछ कहकर मुझे दुख मत करो, मुझे धोखा न दो। She is not even thinking about that need. वह जो उस मांग के बारे में नहीं सोच रही है। She doesn't have a child. She thinks it's all the time is past. We can't have it वो anymore. सोच रही है कि बहुत समय गुजर चुका है, कोई संतान नहीं रही है, सब समय बीत चुका And है। she thinks like वो that. ऐसा सोच रही है, Gotten it out of her mind. अपने दिमाग से भी उस बात को निकाल चुकी है। But the prophet, without her asking, the prophet says by next year this time, or, whatever time it takes to conceive and bear a child, you will be embracing a son by that time, he said. पर जो है भविष्यता कहता है कि नहीं, अगले साल वसंत ऋतु से पहले जो भी समय है बच्चा पैदा होने का, तेरे पास बच्चा होगा। You will conceive now and give birth in time. तू अब गर्भवती होगी और सही समय पर He बच्चा said, पैदा oh, करेगी। no, don't tell me something that can't happen. कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कहो जो नहीं हो सकता है। Prophet says, no, it will happen. भविष्यता कहता है कि नहीं, जरूर And the पूरा woman होगा। conceived and had bare a son at the season that Elijah had said unto her, according to the time of और life. स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उसे कहा था, उसी समय तक जब पूरे दिन हुए उसका Now एक see, पुत्र I उत्पन्न हुआ। read this to you just to show you where things lead. देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहाँ पर चीजें तुम्हें लीड करती हैं, ले जाती हैं Increase. वृद्धि की ओर।
They were just husband and wife. वे सिर्फ पति और पत्नी थे। She made a prophet's chamber so that the man of God can on his travel come and comfortably stay and eat. उसने जो है भविष्यता के लिए ऊपरी कोठरी बनाया ताकि भविष्यता आकर वहां पर आराम करे रहे। She just did something for him, gave something to him. उसने कुछ उस भविष्यता के लिए सहायता की, उसने She's कुछ heard दिया। his preaching and she's heard, his ministry. उसने उसके प्रचार को सुना, उसकी सेवकाई के बारे में सुना। She loved this man of God. इस परमेश्वर के भक्त को उसने बहुत She प्रेम wanted to किया। do something for him. वह कुछ उसके लिए करना चाहती थी When she did it, और जब वो करने लगी it led to increase. वह वृद्धि की ओर चलने लगी। Now, the main issue, she did not have a child. Now she has a child. Now the two has become three now. अब मुख्य समस्या यह है कि उसकी कोई संतान नहीं थी, अब वे दो लोग थे, अब तीन हो गए हैं। Hello? हेलो, How many of you believe you can increase like that? कितने लोग भरोसा करते हो कि ऐसी वृद्धि Just आप like पा सकते हो? that. वैसे ही वृद्धि हुई। God's blessing. परमेश्वर की आशीष, Increase. वृद्धि होने लगी। Blessing brings increase. आशीष जो है वृद्धि को लेकर आती She didn't ask for it. है। उसने कभी उसके बारे में नहीं पूछा, She didn't even think that it's possible. उसने कभी सोचा भी नहीं कि ये मुमकिन है। But the prophet calls her and tells her, you will have. That's और it. भविष्यता ने उसे बुलाकर बोला कि तुम He is पाओगी। thinking about what I can do for her. क्या मैं इसके लिए कर सकता हूँ, ऐसी सोच रहा था वह। Just gave to her. सिर्फ उसे दे दिया। Just spoke the word and the word came to वचन her. उसको सीधे तौर से उसे बोला और वो वचन Now, उसकी when जिंदगी the में पूरा child हुआ। was grown, the story अब continues. बच्चा पैदा हो गया, बड़ा भी हो रहा है, कहानी शुरू हो Because रही है। blessings don't stop. Remember, I told you the law of increase is working all the क्योंकि time. आशीष कभी रुकता नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था लगातार हर वक्त काम करती रहती है। So when you honor your तो elders, जब तुम अपने बुजुर्गों का आदर the करते हो, spiritual elders आत्मिक माता that feed पिता you का, spiritually, जो तुम्हें आत्मिक रूप से the खाना law देते of हैं, increase and blessing works and it works non-stop. परमेश्वर की व्यवस्था लगातार काम करती है, नॉन स्टॉप काम करती रहती है। So now it's working. तो अब काम कर रहा The है, child is born, बच्चा पैदा हो गया है, but the law is working. पर व्यवस्था काम कर रही So है। that the child, when he grew up, he was one day among the reapers in the field with the father and so on. And all of a sudden he cried saying, oh, father, my head, my head. तो जब बच्चा और उसका बाप दोनों एक जगह काम कर रहे थे तो अचानक बच्चा चिल्लाकर बोलता है कि मेरा सिर, मेरा And सिर। the father said to someone, take him back to the house and give him to the और mother. पिता जो है किसी सेवक को बुलाकर बोला कि इसे And he घर ले sat जाओ, आराम on दो। his mother's lap for half a day. और वो अपनी माता की गोदी में जो है आधा दिन जो है And लेटा रहा। then he died. और फिर उसके बाद The उसकी Bible मृत्यु हो गई। says he died. बाइबल कहता है कि उसकी मृत्यु हुई And the woman just took the child and put him on the prophet's bed. और वो स्त्री जो है उस बच्चे को लेकर उस भविष्यता के बिस्तर पर She लिटाई। went to her husband and said, give me some ride that I want to go to see the prophet. Arrange for me somebody to take me to the और वो prophet. कहने लगी कि मुझे कोई अच्छा गाड़ी तैयार करके दो कि मैं भविष्यता के मिलकर आऊं। She never, spoke about the death and all of this. She said, I want to see the prophet वह जो immediately. है कुछ नहीं बोली अपनी पति से कि बच्चा मर गया, हो गई कि जाकर मैं भविष्यता मिलना So चाहती the हूँ। husband arranges. तो उसके पति ने बंदोबस्त As किया। she approaches the prophet already sees that something's wrong with her. She's coming far away and told the servant, ask her what she wants. और जैसे ही भविष्यता को देखा तो भविष्यता ने जान लिया कि कोई समस्या है और वो पूछी क्या चाहिए Ask उसे, her if it's well with her. और उसे पूछी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। And remember, she says, it is well. और वो कहने लगी सब ठीक है, Everything is well. सब कुछ ठीक चल रहा है। Now I can preach on that for another 10 weeks. मैं और 10 हफ्ते लेकर इसको प्रचार It कर is सकता हूँ। well. कहने लगी कि बहुत अच्छा है, But I'm going to preach about that next week, Sunday morning. पर अगले रविवार को ही मैं इसको लेकर It प्रचार is करने वाला well, हूँ। she says. वो कहने लगी कि सब कुछ But ठीक it's है, not well. पर वो ठीक नहीं था। The son is dead. बेटा मर But चुका she है says it's well. और वो कहती है कि सब ठीक है, Because she knew that this child didn't come to me because I wanted. God gave this child. The prophet spoke this child into being. I am not going to take this. This child is fine. Everything is well, she says. वो कहने लगी कि परमेश्वर ने जो है मुझसे वचन के रूप में बात किया है, उसने मुझे बेटा दिया है, मैं कुछ बुरा नहीं कहने वाली हूँ, सब कुछ ठीक है। कहने लगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। She's expressing her faith and speaking her faith. वो अपने विश्वास को जो बात दिखा रही है, विश्वास की बातें And बोल when रही she है। came to the prophet, she held on to his और वो feet. भविष्यता के पास आई तो उसके पाँव पे गिरी। He knew something was wrong. मालूम क्या है, कुछ गलती Said, है। what happened? उसने पूछा क्या गलती हुई? She said, this is what has happened. उसने कहा कि यही हुआ है। So Elisha is a very strange guy. Powerful prophet. He just took his stick and gave it to the servant and said, go, don't talk to anybody on the way. That's another preaching there. एलीशा ने जो है बहुत ही सामर्थ पूर्वक, बहुत ही अच्छा प्रचारक है, उसने अपने सेवक को एक लकड़ी देकर कहा रास्ते में किसी से बात नहीं करना। इसको लेकर मैं और प्रचार कर सकता हूँ। Don't talk to anybody. किसी से बात नहीं करना।
Don't say hello, don't say anything. Somebody will be asking, where are you taking the man of God stick and going? Don't say anything. किसी से हेलो नहीं करना, किसी से कुछ बात नहीं करना। रास्ते में बहुत लोग पूछेंगे, किसी से कुछ बात नहीं करना, सीधा बिना बात किए चलना। When you open your mouth, you'll make a blunder. अपना मुंह खोलोगे तो सब गलती करोगे। Don't talk anything. किसी से कुछ बात मत करना। Go straight सीधे तौर से जाना and put the stick on his head, और इस लकड़ी को उसके सिर पर रखना, on his face. उसके चेहरे पर रखना। And the fellow went and started towards the house. और वे व्यक्ति जो है उसके घर की ओर चलने लगा। But the lady held on to the feet of the prophet, so the prophet said, all right, I'll come, don't worry, I'll और come. पर स्त्री जो है उसके पाँव में गिरकर जो कहने लगी, ठीक है मैं आता हूँ, मैं आता So हूँ। the prophet himself goes. तो भविष्यवक्ता खुद जाता है। By the time the fellow went and laid the stick, और इस समय के बीच जो है वो भविष्यवक्ता का सेवक and जाकर he घर checks गया। out the child, and the child is still not breathing, no sign of life. और वो बच्चा जो है उसके सिर पर रखने के बाद भी जो And he है comes सांस to नहीं the ले रहा prophet है। and says, the child is dead. भविष्यवक्ता के पास आकर कहता है कि बच्चा मर चुका है। And then the prophet comes फिर भविष्यवक्ता वहां पर आता है, and goes into the room, फिर कमरे में जाता है, and we read this wonderful story of how he literally raised this child back to फिर life. कमरे में जाता है। फिर अद्भुत सी कहानी हम बढ़कर देखते हैं कि कैसे उस बच्चे को जो है Verse वापस जी 34 उठाता है। says, 34 वचन He कहता went है, and lay upon the child and put his mouth upon his mouth, his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands. And he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। वह लड़के पर पसर गया, तब लड़के की देह गर्म होने लगी। Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him. तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, फिर चढ़कर लड़के And the पर पसर child गया। sneezed 7 times, and the child opened his eyes. तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें And he खोली। called Gehazi and said, call the Shunammite. तब एलीशा ने गेहसी को बुलाकर कहा, सुनेमी को बुला ले। So he called her, and when she was coming unto him, he said, take up thy son. जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। So non-stop miracles are तो happening. नॉन स्टॉप अद्भुतें यहाँ हो रही हैं। What started it all? कहाँ से शुरू हुई? She went to hear the prophet, heard his preaching, and wanted to do something for him. Ended up building a prophet's वह chamber. जाकर जो है इस भविष्यता की बातों को सुनने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए गई। आखिर में क्या हुआ? उसके लिए ऊपर एक कमरा बनाकर दे दिया। Many times she has fed him, she has taken care of him, and housed him, and showed him hospitality. फिर उसको जो है घर ले गई, उसे कमरा बनाकर उसकी सारी चीजों को उसने देखभाल किया। She gave him the best. सबसे उत्तम चीजें उसने दी उसे। I don't know if they had table and chair and lamps and all of that. मुझे नहीं मालूम टेबल्स हो या चेयर्स हो, कुर्सी हो, दिया हो। She provided it for this great man of God. इस परमेश्वर के भक्त के लिए जो उसने She सब gave the कुछ दिया, best. सबसे उत्तम पदार्थ She दिए। honored him. उसने उसका आदर She किया, appreciated his फिर उसकी ministry. सेवकाई की प्रशंसा She looked की। upon him as the man of God, a saint of God, and honored him in that way. उसे परमेश्वर के भक्त के रूप में देखा और उसे आदर दी, उसकी And प्रतिष्ठा this की led to a miracle of having a child. और एक बच्चा उत्पन्न करने लायक अद्भुत And उनकी then when the जिंदगी में हुआ। child died, it led to a miracle of being raised from the dead. फिर उसके बाद उस बेटे की मृत्यु जब हुई तो उसे मृतकों में से जी उठाया। Hello. हेलो, Miracles don't stop. अद्भुत कभी नहीं रुकते।